Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to read chapter number 9, that is guidelines on drafting of communications. Right? So, here we begin. It says, uh, जब भी हम कोई भी कम्युनिकेशंस को ड्राफ्ट करते हैं, राइट, तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है। थोड़ा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन रिलेशन टू पेपर नंबर 3। ठीक है, ये चैप्टर नंबर, अगर मैं कहूँ आपका 6 7 इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इन पे। ठीक है, तो प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट कम्युनिकेशन एंड इट्स अप्रूवल। ठीक है, बोलता है नो ड्राफ्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस। कोई भी सिंपल है तो उनमें कोई ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दोज ऑफ रिपीटेटिव नेचर फॉर विच स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एग्जिस्ट, सच केसेस में बी सबमिटेड टू द अप्रोप्रिएट विद फेयर कॉपीज ऑफ द कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, हम ऐसा कई बार नहीं करते हैं। बोलते हैं नो ड्राफ्ट इज रिक्वायर्ड, कोई भी जो है ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट नहीं। और ड्राफ्ट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयर्ड इन सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस। जो भी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस होते हैं, ठीक है ना, उनमें कोई सी भी ड्राफ्ट की जरूरत नहीं होती है। और दोज ऑफ रिपीटेटिव नेचर, तो जो रिपीटेटिव नेचर होते हैं, नेचर ऑफ वर्क है, ठीक है, उसके लिए भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करती है। सच केसेस जो है मे बी सबमिटेड टू द ऑफिसर विद फेयर कॉपीज। ठीक है, such cases जो हैं that may be submitted to the appropriate officer with fair copies of the communication। ठीक है, सीधा सीधा आप जो है, तो इन दो केसेस में आपको कोई भी ड्राफ्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन दो केसेस के अंदर आपको सीधा जो है फेयर कॉपी जो है ऑफ कम्युनिकेशन सिग्नेचर के लिए आप पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रेट और सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, या फिर दूसरा है आपका रिपीटेटिव नेचर। In cases which are complex in nature, okay, or wherein proposed line of action or decision is not clear or having more than one option, the draft communication will be put up for consideration and approval along with the notes for by the initiating level of। यहाँ पर जो कोई केस जो थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स का है, नेचर कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, ठीक है, जो है कॉम्प्लेक्स इन नेचर, वहाँ पे प्रपोज लाइन ऑफ एक्शन और डिसीजन है इज नॉट क्लियर। ठीक है, प्रपोज लाइन ऑफ एक्शन जो है नॉट क्लियर और हैविंग और मोर देन वन ऑप्शन है। ठीक है, तो ड्राफ्ट कम्युनिकेशन विल बी पुट अप फॉर कंसीडरेशन, तो ड्राफ्ट जो है वो पुट अप फॉर कंसीडरेशन एंड अप्रूवल अलोंग विद द नोट्स बाय द इनिशियल लेवल ऑफिसर, तो उसके आप एक पुट अप करेंगे। आफ्टर अ फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द कंप्यूटर अथॉरिटी, ही मे हैव द फेयर कम्युनिकेशन मेड फॉर हिज सिग्नेचर और ऑथराइज इट्स इशू अंडर द सिग्नेचर ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, इट्स इशू नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी जो है कम से कम इशू करेंगे। ऑल ड्राफ्ट कम्युनिकेशन पुट अप फॉर अप्रूवल मस्ट बी स्पेसिफाइड अकॉर्डिंगली बाय राइटिंग ड्राफ्ट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। और जो है वो जितने भी ड्राफ्ट कम्युनिकेशन है पुट अप फॉर अप्रूवल मस्ट बी स्पेसिफाइड, क्या लिखना है, राइट बाय द राइटिंग ड्राफ्ट लिखना है आपको टॉप राइट कॉर्नर में, टॉप टॉप सेंटर में, सॉरी, एट टॉप सेंटर में आपको उसको ड्राफ्ट लिखना है। ठीक है, ऑल ड्राफ्ट कम्युनिकेशन पुट अप फॉर अप्रूवल मस्ट बी स्पेसिफाइड अकॉर्डिंगली बाय राइटिंग ड्राफ्ट एट टॉप सेंटर में आपको ड्राफ्ट लिखना है। देन वी हैव द ड्राफ्ट ऑफ नहीं, कंप्यूटर प्रिंट आउट ऑफ ड्राफ्ट इज टू बी सबमिटेड फॉर अप्रूवल। ड्राफ्ट लेके ही आपको सबमिट करना है। द ड्राफ्ट ऑफ लेटर्स हैविंग क्रूशियल पॉलिसी के अंदर जो है क्रूशियल पॉलिसी की बात होती है। ड्राफ्ट ऑफ लेटर्स जो है हैविंग क्रूशियल पॉलिसी फाइनेंशियल एंड विजिलेंस इम्प्लीकेशन, क्रूशियल पॉलिसी के बारे में, कोई भी फाइनेंशियल के बारे में, कोई भी विजिलेंस इम्प्लीकेशन के बारे में है। And where the drafts have been changed by senior officers in the process of movement of files upwards, barring जो grammatical छोड़ के, also form the part of the correspondence portion। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी जो ड्राफ्ट है हुआ है, क्योंकि जो कोई भी जो ड्राफ्ट है जो क्रूशियल पॉलिसी के रिगार्डिंग है, या फिर फाइनेंशियल या फिर विजिलेंस इम्प्लीकेशन जिसके अंदर भी आती है, ठीक है, and if it is changed by senior officer, अगर उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं by the senior officer, ठीक है, तो it should also form a part of correspondence portion, तो आपका बनेगा। ठीक है, कह रहा बारिंग ग्रामेटिकल करेक्शंस अगर किसी में है तो वो आप छोड़ सकते हैं।
अदरवाइज अगर कोई भी है, कोई चेंजेस लाते हैं तो आपका वो पार्ट बनेगा। द ऑफिसर अप्रूव द इशू ऑफ अ ड्राफ्ट अपेंड्स इज इनिशियल विद द ड्राफ्ट डेट ऑन द ड्राफ्ट इफ नेसेसरी आफ्टर। ऑफिसर जो है अप्रूविंग द इशू ऑफ ड्राफ्ट, जो भी ऑफिसर अप्रूव करते हैं ड्राफ्ट को, ठीक है, द ऑफिसर अप्रूविंग द इशू ऑफ अ ड्राफ्ट, ये अप्रूव कर दो, अपेंड्स हिज इनिशियल्स विद द डेट ऑन द ड्राफ्ट नेसेसरी आफ्टर एडिटिंग। अगर जरूरत होता है तो एडिटिंग के बाद जो है वो ऐसा कर सकते हैं, उनको सिग्नेचर डालने हैं। अब ई फाइल में क्या है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर इनिशिएटिंग अ ड्राफ्ट एट एनी लेवल इन द हियरार्की। ई फाइल के अंदर क्या है, ई फाइल सिस्टम में जो है आप जो है फाइल जो है ड्राफ्ट एट एनी लेवल, देयर इज अ प्रोविजन फॉर इनिशिएटिंग अ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कैन बी इनिशिएटेड एट एनी लेवल इन द हियरार्की and getting it approved and signed by any level with a predefined approval and signatory rule as per, ठीक है। There is also a provision to initiate a draft without a file in case of receipts received. Yeah, also there is a provision to initiate a draft without a file in case of receipts. Once the draft is approved, एक बार जो draft है वो approve हो गया, no changes can be made in the draft content by any authority. There is also option for appending e-signed by the authority. ये है once the draft is approved, no changes can be made in the draft content by any authority. draft content के अंदर कोई भी changes नहीं। If necessary, the file has to be reserved for amendment of the draft. तो then the file has to be reserved for amendment. ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन देते हैं फॉर ड्राफ्टिंग के। ड्राफ्टिंग में जनरल क्या क्या है, देखिए, अ ड्राफ्ट शुड कैरी द मैसेज सॉट टू बी कन्वेड इन अ लैंग्वेज दैट इज क्लियर, कंसाइज एंड एम्बिगुअस। आपकी जो लैंग्वेज जो होनी चाहिए ना, कैसी होनी चाहिए, एकदम क्लियर, कंसाइज एंड अनएम्बिगुअस। लेंथी सेंटेंसेस, एब्रप्टनेस, रिडंडेंसी, सर्कमलोक्यूशन, एक ही बात को बार बार रिपीट करना, सुपरलेटिव्स एंड रिपीटिशन अदर ऑफ वर्ड्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ आइडियाज बी अवॉइडेड। लेंथी सेंटेंसेस नहीं बनाने आपने, एब्रप्टनेस, एब्रप्ट नहीं होना चाहिए नोट आपका, रिडंडेंसी, ज़्यादा जो है बार बार आप वो कर रहे हो, रिडंडेंट हो रहा है, मतलब कि बार बार एक ही वर्ड को बार बार यूज कर, सर्कमलोक्यूशन भी वही वही आता है, ठीक है। सुपरलेटिव्स और सुपरलेटिव्स का रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, ऑब्जर्वेशन और आइडियाज शुड बी अवॉइड। क्या करना है आपको, को अवॉइड करना। इफ अनअवॉइडेबल, लेंथी कम्युनिकेशन आर जनरली कंक्लूडेड विद अ समरी स्पेसिफाइंग द एक्शन एनी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एड्रेसी। इफ अनअवॉइडेबल, मान लीजिए ये सब कुछ अनअवॉइडेबल है, तो लेंथी कम्युनिकेशंस आर जनरली कंक्लूडेड, तो आपको क्या करना है, कंक्लूड करना है इसको। लेंथी कम्युनिकेशन आर जनरली, तो वो कहता है आपसे, अगर मान लीजिए ऐसा करना अनअवॉइडेबल, इसमें आप क्या करेंगे, तो कंक्लूड कर दीजिए, कंक्लूड समरी स्पेसिफाइंग द एक्शन if any expected from the, if any expected from the addressee, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन demanding from a ministry, department and purporting to convey the view or order of government must specifically be expressed to have been written under ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है, जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जाते हैं, जिनका काम है टू कन्वे द व्यूज और ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आप जो है कन्वे कर रहे हैं व्यूज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेसिफिक have been written under the have been written under the directions of the government. Okay? The number and date of the last communication series, and this is not from the address. This last communication subject always be referred to. The number है और जो date of his last communication, and if this is not from the addressee, his last communication should always be referred. Always भी refer करना चाहिए आपको। Where it is necessary to refer a series of communication, this is written on the margin of a draft. यहाँ पे सीरीज करना है आपको, है आपको मार्जिन ऑफ द ड्राफ्ट में करना, ठीक है। बात करते हैं इन द ई फाइल सिस्टम, देयर इज अ देयर इज अ प्रोविजन फॉर क्रिएटिंग अ ड्राफ्ट इन अ टेम्पलेट। आप टेम्पलेट में जो है एक ड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हो वहाँ पे। ऑल्सो द ड्राफ्ट क्रिएटेड इन अ वर्ड कैन बी अपलोडेड डायरेक्टली द सिस्टम।
तो ये हमारा ड्राफ्टिंग वाला है, राइट? गिव मी 5 minutes प्लीज.
ऑलराइट। तो हम थे यहाँ पे कि मार्जिन जो है, मार्जिन में आपको क्या लिखना है? Then instruction that a draft should carry the message. Should carry the message, should to be clear, एकदम क्लियर, कंसाइज और होना चाहिए। लेंदी सेंटेंसेस जो हैं आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। एब्रप्टनेस, रिडंडेंसी क्या है, ये आपको अवॉइड करने हैं, ये सब चीज़ें। एंड थर्ड था आपका कन्वे द व्यूज़, द ऑर्डर मस्ट स्पेसिफिकली एक्सप्रेस रिटन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द नंबर एंड डेट ऑफ लास्ट कम्युनिकेशन द सीरीज है, तो उसको भी आपको लिखना है। एंड लास्ट कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी रेफर टू विद द नेसेसरी सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन मार्जिन ऑफ, अगर आपको ज़्यादा है तो मार्जिन करना है ड्राफ्ट में। फर्दर इन द ई फाइल सिस्टम देयर इज अ प्रोविजन फॉर क्रिएटिंग अ ड्राफ्ट इन अ टेम्पलेट। टेम्पलेट आप कर सकते हैं वहाँ पर। ऑल्सो द ड्राफ्ट पीरियड इन वर्ड कैन बी अपलोडेड डायरेक्टली टू द सिस्टम, ठीक है। देयर आर अदर वेज लाइक टाइपिंग डायरेक्टली टू द एडिटर एंड द ड्राफ्ट एंड यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट फंक्शन suitable source. While asking for information, comments, etc. from the addresses, specify the date by which they are required. आपके जब भी आपको कोई भी, अगर आप इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक है, आप हमें हमें आपसे ये इन्फॉर्मेशन ये कमेंट चाहिए, उसके अंदर आपको स्पेसिफाई द डेट। दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको डेट स्पेसिफाई करनी है। विच देयर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेड ऑफ मे बी सेंट इमीडिएटली, इट मे बी सेंट बाय, तो इस तरह से आपको करना है ये, ठीक है। यूजली जो है नहीं करते, मे बी सेंट क्लिक के रख देते हैं, नहीं, स्पेसिफाई द डेट, ठीक है। मे बी सेंट बाय इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है ऑल ड्राफ्ट्स पुट अप ऑन अ फाइल शुड बियर द फाइल नंबर, उनके ऊपर एक फाइल नंबर होना चाहिए, तो वो तो होता ही है आपके पास, ठीक है। व्हेन टू और मोर कम्युनिकेशंस आर टू बी इशूड फ्रॉम द सेम फाइल टू द सेम एड्रेसी on the same date, a separate serial number may be inserted before the numeral identifying the year to avoid confusion reference like this। देखिए ये कह रहा है इफ व्हेन टू और मोर, जब भी हम दो या दो से ज़्यादा जो है कम्युनिकेशन आर टू बी इशूड फ्रॉम द सेम फाइल टू द सेम एड्रेसी ऑन सेम डेट, ठीक है। तो अ सेपरेट सीरियल नंबर जो है उसे कह देते हैं, एक सेपरेट जो है सीरियल नंबर उनको दिया जाता है, बी इंसर्टेड बिफोर द न्यूमेरल आइडेंटिफाइंग द ईयर। ये जो ईयर से पहले जो है आपको इसको अंदर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये तो ठीक है, ये सेपरेटर हो गया, ये भी ठीक है। ये आपका 5i आ गया, 52i आ गया। गलती से 01 जो है गलती से दे दिया है आई थिंक, है ना। ये गलती से दे दिया है आपका 2019 हुआ, क्योंकि यहाँ पर ईयर वाला होता है। तो यहाँ पर 1 की जगह यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है। बस 1 की जगह पर आपको 2 कर देना है, ठीक है। इसके अलावा इन ई फाइल सिस्टम द डिफरेंशिएशन इज डन बाय डिफरेंट इशू नंबर्स व्हिच अपीयर ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेटर एज वेल एज table of contents in the file which the issues are made. The file number is present at the top of the right letter. A draft should clearly specify the enclosures which are to be the fair copy, which are to accompany the, yeah, clearly specify the enclosures हैं इसमें। In addition, short oblique lines should be drawn at appropriate places in the margin for ready reference by the linguist who fair and compare the draft with the fair. The number of enclosures should also be indicated at the end of the draft on the bottom left of the page number, thus enclosure 3। पढ़ लेते हैं इसको। अ ड्राफ्ट शुड क्लियरली स्पेसिफाई द एनक्लोजर, जो है स्पेसिफाई द एनक्लोजर्स को स्पेसिफाई करना चाहिए। Start to accompany the fair copy. In addition, short oblique lines should be oblique lines, ट्रांसपेरेंट वही वाला है क्या, नोट एक्सप्रेस इन और डन इन डायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट अबाउट लाइन एट एन एंगल, स्लोपिंग लाइन्स इस तरीके से, ओके। बोलता है शॉर्ट ओब्लिक लाइन शुड बी ड्रॉन एट एन अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द मार्जिन फॉर रेडी रेफरेंस बाय द डीलिंग ऑफिसर्स who fair and compare the draft with the fair। should be
appropriate place margin for ready reference by the dealing of compare and compare the draft here margin for ready reference by the dealing and the number of enclosure should be the end of the ठीक है फिर जो है यहाँ पर short oblique lines जो है should be drawn at appropriate places in the margin for ready reference by dealing of who fair and compare the draft number of enclosures should also be inducted number of enclosures कितने डाल रहे हैं वो भी आपको बता at the end of the draft at the bottom left page left of the page 10 enclosure 3 ठीक है if copies of an enclosure referred to the draft are available and therefore not to be photocopied indicate margin of the draft below the relevant oblique line if copies of an enclosure जो है referred to the draft are available and are therefore not to be photocopied indicate the defective margin of the draft below so if a copies of an enclosure so we have copies of an enclosure referred जो है in the draft are available are therefore not copied indication to the defective to be margin to the relevant बोलते हैं फिर the communication to be dispatched by post is important example notice cancelling license enclosure valuable documents the agreement is post people or in to be given on the draft by section कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन वो है डिस्पैच करना आपको बाई पोस्ट अगर वो कोई भी इंपॉर्टेंट नेचर का है जैसे कोई भी नोट किसी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट कोई भी है ठीक है such agreement certificate as to whether it should be sent through report जाएगा या फिर हो जाएगा फॉर एन इंश्योर्ड कवर इस बताना है जाएगा इस टू ड्राफ्ट बाय द सेक्शन ऑफ ठीक है ड्राफ्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड इन डबल स्पेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राफ्ट में आपको डबल स्पेस white space between the lines for writing by the officer. Urgency grading to the draft is so marks or under the orders of note rank, not lower rank than a section officer. Urgency grading जो है not lower in rank than a section officer. The name telephone number आएगा उसके अंदर आपका नाम डेजिग्नेशन टेलीफोन नंबर फैक्स नंबर एंड ईमेल एड्रेस of the officer whose signature over whose signature the communication is to issue in a draft. It would be beneficial to number in the fact for the person to the flag DFA is to be attached to the draft flag जो है एक flag लगाएंगे उसमें DFA का is to be attached to the draft ठीक है if two or more drafts are submitted the file so DFA1 DFA2 and so on like this then we have authentication of government orders okay so the all orders and other instruments made and executed in the name of president should has to be made in his name and signed by an officer having regular or ex above the rank of or other specifically authorized to authenticate 2002 as amended authentic government order कौन authenticate करता है मतलब all orders and other instrument made and sent जितने भी orders जो है other instruments जो हैं if they are executed in the name of the president के नाम पर अगर किए जा रहे हैं then it should be pressed to be made in the name and कैसा बोलना है that expressed to be made in the name and signed by an officer having regular हो और ex officio of and above the rank of and above the rank of under secretary होना चाहिए ठीक है और other specifically authorized this is this okay where the power to make orders notification etc is conferred by a statute of the government of India then will be expressed to made in the name of government of India जहाँ पे जो power है to make orders in conferred by a statute अगर वो आपसे statute के द्वारा दी गई है such orders and notifications in the name of
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Yeah. Addressing communications to officers by name. Normally no communication other than classified nature for a demi official. तो या तो क्लासिफाइड होगा या फिर डीओ जो होता है ना, डीओ लेटर. ठीक है, एड्रेस और मार्क टू ऑफिसर बाय नेम. नो कम्युनिकेशन other than classified for this unless it is intended that the matter raised therein should receive his personal attention. That the matter raised in either because of its nature, urgency, or importance, or because ground that has been covered by personal discussion. He would be in a better position with it. It's a head of organization written above subject. Okay. Normally जो है no communication other than that of a classified nature or a demi official address में marked by name. ठीक है, unless it is intended that आपकी intention है, yes it is intended that the matter जो है urgency or some best covered by person better just to the head of the ठीक है. टेंशन देनी है आपको, above subject आपको लिखना. Then we have the drafting of demi. किस तरीके से आपको इससे ऊपर वाला जो है कम्युनिकेशन ऑफिसर बाय नेम में बताया ना आपको दी ऑर्गेनाइजेशन रेस्ट ऑफ दी हेड मार्क होगा और काइंड किया जाएगा डेप्यूटी सेक्रेटरी को. ड्राफ्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ड्राफ्ट ऑफ डेमी ऑफिशियल as the objective of writing a demi official at the person at the person the style of writing should be direct. Writing जो है ना personal, friendly. More usage of voices to prefer. I notice rather than this. I notice. Seek your cooperation rather than it is to come to the issue. A DO letter should not exceed 1 page. Simply to head not page rather than if the message to be conveyed is lengthy, अगर lengthy है तो try to condense it 1 page. A few small paragraph in a manner that holds the interest of the arguments can be set out in can be draft DO letter is prepared by the person. Draft DO letter होता है ना, प्रिपेयर करना होता है by the personal staff of the color code and use of national instruction. Responsibility mapping regarding issue. Clear copying the draft approved during that all primary responsibility is fair copying the draft demo of letter approved by the committee. This is all person staff of the केस में ये important है यार, important so is third by the personal staff of the officer who important है क्योंकि fair copy जा रही है जो कि letter approved by the competent.
वो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेयर कॉपिंग ड्राफ्ट डेमी ऑप्शन अप्रूव्ड बाय द कमेंट ऑल करेक्शंस जो पर्सनल स्टाफ को देंगे, ठीक है। और इसको फेयर कॉपी द ड्राफ्ट अप्रूव्ड बाय द कमेंट ऑल करेक्शंस तो डीलिंग देख लेगा एंड दैट ऑल एनक्लोजर्स आर अटैच्ड टू द ड्राफ्ट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी an issue of fair communication that is facts and equals, if any recommended case of the DO बोलता है if a fair communication as the case of the issue of fair communication is employed with the government case of the officer and the DO issue of fair DO letter with is enclosed by the section if issue of fair demi of letter others to the draft person अगर अगर उसका अटैच कर रहा है हो जाएगा include sending of fax mail as a क्या क्या है fax पर भेजनी है then in case the communication is to be issued through a central issue section okay making entries in the book of back percent book के अंदर आपको obtaining signature ठीक है and receiving officer of the returning office downloading officer pocketing officer after obtaining approval of the competent authority as per the departmental अपने I think it's better now क्या बोलते हैं after obtaining approval of the competent authority as per the department section officer designated for this purpose will upload the approved version of in the pragati after on the approval as per the detailed instruction section officer जो है ना officer क्या करेंगे the officer designated for this purpose will upload the approval in the pragati ठीक है ई समीक्षा epigram online computer monitor system statistics from implementation project group demo and similar other portals screenshot of the portal of print copy as office copy after uploading the approved document as per the department in the section of the या फिर designated for the purpose will upload the approved version of the प्रगति ई समीक्षा सीपी काम पे डालेंगे ऑनलाइन कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम पे डालेंगे स्टैटिस्टिक्स program implementation department instructions are to be issued to central issue section are to be issued to the regarding use of window type ordinary envelope by registered post documents with rubber stamping the office copy separate foreign post किस चीज के बारे में बोलता है मतलब बोलता है डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस आर टू बी इशूड टू दी अगर कोई भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस देनी है मान लो ठीक है आर टू बी इशूड टू दी सेंट्रल इशू सेक्शन रिगार्डिंग यूज ऑफ विंडो टाइप वैसे और ऑर्डिनरी एनवेलप कम्युनिकेशन टू बी सेंट बाय रजिस्टर्ड बोर्ड
with acknowledgement, speed, etc. The rubber stamping the office copy of communication, segregating those is sent by foreign post from the rest, use of franking machine, etc. ठीक है, अभी तो ये सब कुछ होता है, तो डिपार्टमेंट जो है हमेशा सेंट्रल इशू सेक्शन से करवाएंगे। इस सेक्शन ऑफिसर जो है इज टू स्क्रूटनाइज द सेक्शन डिस्पैच रजिस्टर, तो है टू स्क्रूटनाइज, इसको स्क्रूटनाइज करना है सेक्शन ऑफिसर को। 10 सेक्शन का जो डिस्पैच रजिस्टर है अपेंडिक्स वंस अ वीक, हफ्ते में कम से कम एक बार। if it been properly maintained and appendix detailed applies dated initial in the token of, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं इशू ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स। फेयर सेल्फ कंटेन्ड इंटर डिपार्टमेंट नोट्स आर इशूड इन द सेम मैनर एज अदर कम्युनिकेशन। बोलता है इशू ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल, बोलता है फेयर सेल्फ कंटेन्ड इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स आर इशूड इन द सेम मैनर एज एनी अदर कम्युनिकेशन। सेल्फ कंटेन्ड इंटर डिपार्टमेंट नोट्स जो है same manner as any other communication. Interdepartmental notes sought to be recorded on files are fair typed and in the dispatched through the, but they are dispatched, okay, central issue section. Before in the file central section, mark the movement in the file movement register, where relevant in electron form in the case of auction on file, and in the section register, other case of inspector section file, where a challan and duplicate in place file in the file and make together to the dealing officer sections on file. Mark the movement in the file movement register, ठीक है, where relevant in electronic form, in the case of sections on file and in the section register, and in the section register in other cases movement to be able against file or register in respect of sections on file। अगर मान लीजिए सेक्शन अपनी ऑन फाइल है, prepare a challan, एक challan prepare and duplicate, अच्छा, and place one copy on the file and make over the other to the enter the file in the book, then we have in the file the issue can be made electronically and copy of the issue attached to the file that is done by the system, by the system for the file the dispatch is made, file can be dispatched na done file the dispatch the file the dispatch is made electronically all data into होता है file the file the dispatch copy various
where is it? All right. नहीं है as such. With this, thank you so much and have a great day.